Welcome friend to our new video with Dr S Srinivasan on the new normal. Everybody knows और सभी को यह मालूम है कि कोरोना के बाद एक नई परिस्थिति आ गई है, एक नया नॉर्मल पैदा हो गया है। तो ये क्या है, ये कैसे हमको इफेक्ट करेगा, हमको इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी हैं, जिन्हें मार्केटिंग और मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। ही इज ऑल्सो अ वेलनेस ट्रेनर, मेंटर। सो डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो हम न्यू नॉर्मल की बात करेंगे सर, और मैं अभी आपके लिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप बात कर सकते हैं जी। बोलिए सर। हाँ, नमस्कार अजय साहब एंड नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो आज का सब्जेक्ट मैटर ऐसा है, थोड़ा सा अजब सा लगता होगा आपको। ये न्यू नॉर्मल क्या चीज है? न्यू तो हम जानते हैं, नॉर्मल भी जानते हैं, मगर न्यू नॉर्मल नहीं समझते, क्योंकि एक तरह विचित्र एक्सप्रेशन है न्यू नॉर्मल। ये जो न्यू नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो अभी कोविड के बाद ही ये सब चालू हो गया। उससे पहले कोई न्यू नॉर्मल वगैरह नहीं देख रहा था। कोविड के बाद ये ज़्यादा जोर से ये अटेंशन में आ गया है और उसको ठीक तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। और ये न्यू नॉर्मल एक फिक्स्ड आइटम नहीं है, ये डायनामिक है। आज इधर है, कल उधर है, परसों और कहीं है। सो ये डायनामिक सिचुएशन है, जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। Can we have the first slide, please? Yeah. 1 minute. Yeah, that is okay. Is that all right? Yeah. Now, see, change is the basic concept everywhere nowadays. कोई भी आइटम विदाउट चेंज नहीं रहता, वो चेंज ज़्यादा होगा। इनफैक्ट अभी रिसेंट टाइम्स में चेंजेस बहुत जल्दी से होते हैं और बहुत गहराई से भी होते हैं, तो उनको जरा समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझने के लिए we'll go back to this statement, change is the only constant। मतलब इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसा है which is constant, that is change। थोड़ा सा it may sound a little funny, change is the only constant। ये जो डिक्टम है वो डेली एप्लीकेबल है। तो आप don't expect any stability, expect only change, and change at all levels. The level of the family, at the level of workplace, at the level of the society, at the level of arts, theatre, you name anything, वो change होता रहता है। For example, movies हम देखते हैं। Movies 10-15 years ago, whatever movies were there, and whatever movies are there today, वो जमीन आसमान का फर्क है। वो change होता रहता है और continuous change keeps on churning. The next slide, please. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये one Greek scholar है, Greek from Greece. The Greek scholars are very old as the hills. You know, 3000 साल, 5000 साल वगैरह Greek scholars होते हैं। और ये जो स्कॉलर आप देख रहे हैं वो हेराक्लिटस करके नाम का है, and he is a Greek guy, and whatever he said is worth noticing now. Next slide, please. उन्होंने कहा कि भाई आप समझो आप एक नदी क्रॉस कर रहे हैं, you are crossing a river, and he said nobody can cross the same river twice. Nobody can cross the same river twice. मतलब क्या होगा, आपको लगता होगा ये नदी तो मैं रोज देख रहा हूँ, the river is there every day and I cross the river every day, every few hours also. So इसका मतलब क्या है? Nobody can cross the same river twice। मतलब आपको without meaning लगता होगा, मगर हेराक्लिटस साहब ने ये बताया कि जो आप नदी क्रॉस कर रहे हैं तो ना आप हैं ना नदी वो नदी है। It may sound funny, but both the river and you have changed.
अभी आगे आप 10 कदम जाके वापस आके क्रॉस करेंगे, दैट इज नॉट द सेम रिवर एंड दैट इज नॉट द सेम यू। तो ये समझने को थोड़ा लोगों को तकलीफ होता होगा, मगर है। So this you can see on many other occasions also. You go to the same hotel to eat the same dish, मगर वो अलग रहता है. You go to the same office, meet the same person, but the same person is not the same. So ये little funny philosophy है, but it is very important to know. Sir, I would like to interrupt and tell people जी that the whole process is dynamic. तो हर क्षण ये बदलते रहता है. जी जी तो जो अभी है वो 1 सेकंड के बाद में चेंज हो गया. जी जी आपका थॉट प्रोसेस, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, दुनिया बदल रहा है, तो हमारा ओल्ड थिंकिंग नहीं चलेगा, न्यू थिंकिंग लगाना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, हाँ जी अब बात करिए. हाँ. जैसे मेहता जैन साहब ने कहा कि आप जो प्रोसेस से चलते रहते हैं जिंदगी में, and that is bound to keep on changing, and you change, your family changes, your friends changes, everything is dynamic and nothing is static. ये डायनामिक प्रोसेस जो होता है, डायनामिक प्रोसेस में हमेशा चेंज होता ही है, और चेंज ज्यादा हो सकता है. ज्यादा डायनामिक हो तो ज्यादा चेंज होता है, जो हमें आजकल देखने को मिलता है. So that principle applies to the river, the friends, the society, the family, the arts, the science, everything. Continuous non-stop changes होते रहते हैं. So that is why ये कहावत है कि ग्रीक में you don't cross the same river twice, because it is not you that is you, and it is not the same river that is a river. तो आगे जाके हम धीरे धीरे देखेंगे कि भाई ये चेंज जो है उसको रेसिस्ट करने में मतलब नहीं. We cannot resist the change because the change is going to happen anyway. So you have to accept the change, and you have to learn to digest the change. You have to learn to live with the change, not for one day, not for 2 days, but for years and decades and centuries. ये change की मन की तैयारी रखना, ये उनका कहना है. Okay, next slide please. बुद्धा साहब ने भी यही कहा. We call him बुद्धा साहब because due respect, we don't just say बुद्धा. गौतम बुद्धा साहब ने यही कहा. उन्होंने कहा कि every morning we are born again in a different avatar. You are born again, not every year, not every century, but every day, every morning. Okay, every subah, every sham, you are changing. And you are gaining a new insight, new approach, new avatar. ये गौतम बुद्धा ने कहा, and that is being repeated nowadays from day to day, from year to year, from century to century. Next slide, please. तो मतलब ये हुआ कि there is no such thing as standard normal. Let me take the example of say you are eating masala dosa in a hotel. अब बोलेंगे वही मसाला डोसा है, मैं बोलूँगा नहीं वो मसाला डोसा अलग है. एंड इट इज इनफैक्ट अलग है, क्योंकि रोज का जो मसाला डोसा में आप दाव डालते हैं और तेल डालते हैं, वो स्किलेट में रखते हैं, वो अलग अलग होता है. हालांकि इट इज द सेम डोसा, but it is a different dosa when you eat it, and when you eat it after 10 minutes again it is a different dosa. So we have a new normal, continuous new normal, continuous new normal. And that produces new results every time, new changes every time, no situation every time. तो ये हमें समझना है. एंड हमें आजकल जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है पोस्ट कोविड, इसको ज्यादा महसूस होता है कि तो ये चेंज जो है that is inevitable. You cannot fight it, you cannot resist it. You have to live with it. You have to learn to adapt and adopt both. We will see that in details. Next slide, please. One major important factor in new normal is the place from where you are working. For the first time in the history of humanity, entire humanity was not allowed to go to office. तो आप बोलेंगे ये भी जरा विचित्र लगता है.
The entire humanity is now being denied access to office. क्यों? उधर कोविड वायरस बैठा हुआ है, एंड लोगों को स्प्रेडिंग से बचाने के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट रखना पड़ता है, एंड ऑफिस स्पेस कम होता है, इसलिए आपको बोलते हैं कि लोग भाई अपना घर में जाके घर का ऑफिस का काम घर में करो, ये सब बोलते हैं. तो वन मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर एलिमेंट which is affecting every one of us is working from home. ऐसा इस चेंजेस तो हजारों है, मगर हम वर्किंग फ्रॉम होम को जरा ज्यादा अटेंशन देंगे, बिकॉज दैट इज हैपनिंग टू द फैमिली, टू द पेरेंट्स, टू द सन्स, टू द डॉटर्स, टू एवरीबॉडी. सो घर में बैठ के काम करना बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इसको समझना चाहिए. लेट अस डू दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको क्या दिखता है? उधर एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है और एक बिल्ली भी है ना. वो बिल्ली आता है क्यूरियोसिटी लेकर के, ये क्या चल रहा है. नॉर्मली लैपटॉप वगैरह ऑफिस में होता है, बिल्ली दूध पीने के लिए आता है, कुछ खाने के लिए आता है, मगर वो बिल्ली अभी आपको कंप्यूटर में बैठ के आपका काम करने में इन्वॉल्व करेगा, इंटरफियर करेगा या उसको इंकरेज करेगा. सो ये नॉर्मल सीन है. बिल्ली हो या कुत्ता हो या कोई भी अनवांटेड फेलो हो, वो ऑफिस में बैठ के आपके जगह पे वो काम कर रहा है. दैट वी शुड बी रेडी. दैट इज वर्किंग फ्रॉम होम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और आप घर से बाहर निकलिए तो आपको कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का है या कोई ऑफिस में जाके किसी से मिलना है, तो वहां भी बोलते हैं भाई डोंट कम टू क्लोज, बहुत नजदीक मत आओ. आज इतने ये सारे जमाने में all these years we were used to गले लगाना बोलते हैं ना, you embrace or you hug the other guy. When we are greeting somebody we hug the guy. So that is not allowed now. क्यों भाई? That by hugging में जो contact होता है, cloth to cloth, office to body to body जो contact होते हैं, वो सब not allowed. तो आपको क्या करना होगा? which you know, कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस रखिए, फिर काम करिए जो भी काम करना है. मतलब आप सिर्फ बोल सकते हैं, यू कैन टच. ये न्यू नॉर्मल है, बट पीपल रेजिस्टेड इट. पीपल डिडंट लाइक इट. ये क्या चीज है? यू कैन नॉट इवन शेक हैंड्स विद समबडी, यू कैन नॉट इवन हग समबडी. व्हाट इज दिस? नाउ इट इज द न्यू नॉर्म. द न्यू नॉर्म इज कीप मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 feet, which is getting diluted now, but it's the standard norm. You should not shake hands with anybody, especially with strangers. Don't shake hands and keep a distance. That is one of the major elements of working from anywhere, office ho ya ghar ho ya kuch bhi. Next slide please. Next slide please. आगे restaurant test out eating. ये just a depiction of how hotels and restaurants are adjusting. तो आपको मालूम है जब आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ स्नैक्स खाएंगे, वो 3 लोगों का सीट के अंदर वो 2 लोग ही बैठते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है, बिकॉज दैट एक्स्ट्रा स्पेस इज मेंट फॉर reducing the transmission of the virus. And here is an example how in a very complicated setup a waiter is taking orders from the clients. तो पूछते आपको क्या चाहिए? सैंडविच चाहिए, बर्गर चाहिए, चिकन टिक्का चाहिए, मगर ये सब ऑर्डर आप दूर से खड़े रह के बीच में गैप रखे ही और एग्जीक्यूट करना. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ a new normal has set in. Next slide please. So in short, today new normal is digitalization of everything. अभी कुछ काम कर रहे हैं आप, everything is now computerized. This is the new normal that we have to learn to adjust and adapt. So all these years we could carry on with analog बोलते हैं ना, वो digital computer लेके ही काम करना ऐसा नहीं है. But now any little thing you are supposed to place an order through your mobile phone, and the order will be delivered through some other mobile phone where it is converted into dosa, vada, hamburger, etc. So ये digital transformation जो बोलते हैं, this is our new normal. In other words, new normal हजारों होते हैं, मगर
अपने रेलेवेंस का जो न्यू नॉर्मल है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे. एंड व्हाट इज द न्यू नॉर्मल? इट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो डिजिटल हो गया. आप कोई भी आइटम देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो सब डिजिटल हो गया. राइट फ्रॉम योर ओन लैपटॉप up to big complicated machines, big aeroplanes, big ships, big whatever, वो सब digital हो गया. तो आपको you have to learn to deal with the digits, not just with the machine. And this is very complicated for senior people who are not used to doing all this overnight. अभी आजकल overnight, अभी for example ट्रेन में बैठना है. हमारे ज़माने में स्टेशन पे जाओ, ट्रेन के अंदर टिकट ले लो या टिकट बाहर के काउंटर में ले लो, सीधा गाड़ी में जाके बैठ लो. मगर आजकल ऐसा नहीं होता. You have to go somewhere, get a guy with a computer program, and you have to see that your seat is given properly. वो सब डिजिटल होता है, उधर जाके आपको बैठना है. This is become a bit of a stress. Senior people, when they try to get inside a plane or inside a train or even inside a taxi, उनको ये सब एडजस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होती है. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, डिजिटाइजेशन जो बोलते हैं, इट इज बिकम अ स्ट्रेस. फॉर एग्जांपल, आई एम 68 years old. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डिजिटाइजेशन, बट आई हैव टू लिव विद इट. वो डिजिटाइजेशन तो रहने वाला ही है, तो मुझे एडजस्ट करना है. आई कैन नॉट टेल द कंप्यूटर डोंट मेक इट डिजिटल. तो हमें डिजिटल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी ये डिजिटाइजेशन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है वो समझने वाले लोग only modern people are understanding. My grandson will know digitization better than I do because all this is new. Now here we have different terminologies. You know, somebody born in the millennium, somebody millennial legacy. हम अभी millennium के अंदर है. और मिलेनियल बोले तो सब डिजिटाइजेशन होता है. वो समझने के लिए हमें यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज. वो अपडेटिंग में बहुत तकलीफ होती है और वहाँ पे स्ट्रेस इतना होता है कि पीपल डोंट मैनेज टू कोप विद इट. सो इवन दे क्विट द जॉब, दे क्विट द सेगमेंट और दे क्विट द डोमेन एंड देन लुक फॉर समथिंग इजियर. बट दिस इज कमिंग मोर इजीली टू द डिजिटल जनरेशन व्हिच इज millennial generation. So millennial जो करेंगे, your own grandchildren will do it easily and we cannot do it. So you have to learn to adapt to this change and you have to learn to live with it. So this is where the maximum stress comes, and this is coming in every walk of life. Let me repeat, whether you are taking a taxi, whether you are ordering a meal, whether you are giving some gift or whatever, you have to do mail ordering, you have got online ordering, everything has become online. ऑनलाइन इतना हो गया कि आपको फोन उठा के बात करने से लेकर के डिलीवरी ऑफ द गुड्स तक ऑनलाइन हो गया. वो बहुत तकलीफ होती है लोगों को समझने में और काम करने में. मगर दिस इज हियर टू स्टे, सो वी हैव टू लर्न टू एडजस्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये जब आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या जब घर में बैठ के काम करते हैं, इतना फर्क होता है आपको. घर के अंदर यू आर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर से और कुछ दिक्कत आ गई, यू डोंट अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, तो किसी को पूछने के लिए कोई आदमी नहीं है, क्योंकि आप और आपका कंप्यूटर बस ये दोनों ही मैनेज करते हैं. सो ये बैकअप सर्विस फॉर कंप्यूटराइजेशन बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं है. एंड मेनी टाइम्स इट लीड्स टू फ्रिक्शन बिटवीन वर्कर्स एंड ऑफिसर्स, एंड many of them don't have the understanding of the software, so mistakes होते हैं. वो it's a tension. मगर घर के अंदर बैठ के काम करने का एडवांटेज ये है कि आप विदाउट डिस्टर्बेंस काम कर सकते हैं. बट द डिसएडवांटेज इज यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड योर वर्किंग सिचुएशन उसको ठीक तरह से समझ के उसको मार्क्स ग्रेड्स देना इज बिकमिंग इवन डिफिकल्ट फॉर योर सुपरवाइजर्स. तो ये अकेलापन is a problem in office also that we have to learn to live with. The management will have to give adequate exposure, adequate opportunities to learn to deal with new different hardware and software.
and it is going to be there. So in an office, I would personally prefer to work, in the old office, because there will be somebody to ask. Otherwise, in a new office, there is nobody there except you on the computer, and you get confused, and there is nobody to help you out with the confusion. So this is a big problem of working from home. Next slide, please. Now, ये तो all over India है, all over the world है, सब digitization हो गया. So which we saw just now. This is a tension, it's a little bit of a pressure, but it is there to stay. Next slide, please. ऑफिस में काम करने से एक एडवांटेज है कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग रख सकते हो. Working from home is easier because of flexibility. Now you have a local to catch at 7 o'clock or 6 or whatever. You can adjust your work schedule in such a way that you become more flexible. And your family is also more flexible to appreciate and cooperate and coordinate. So flexibility of schedule jo hai, that is there a big advantage in working from office. But this is not there in working from home. So if this is good or bad, we don't know. Just now we saw that working from office has its problems because you are totally alone. And if you want a computer technician's help, you have to call him or he has to advise you online. So ये work के बारे में computerization के अंदर काफी tension है, काफी pressure है. And this has just started. COVID has started only 2 years ago. And for all these new fellows to get adjusted will take another 2, 3 years, 4 years, 5 years. And every day software is changing, every day. So it is like the river. You don't cross the same river twice. All computers look the same, but they are not the same. The software is different, hardware is different. So you have to relearn everything. इसको बोलते हैं कि reskilling, skill set आपको बढ़ाना होगा. और वो रोज करना है. रोज मतलब literally every morning, every afternoon आपको करना है. So this is a tension. And we cannot say no, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं होएगा. जब तक आप दोपहर शाम तक उस दिन का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मास्टर न करते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाला है. And it is only going to increase. So at least with regard to flexible timing, आपको एक advantage है कि भाई मैं थोड़ा timing adjust करके ऑफिस आ जाऊँ, and I will do the reverse while going home also. So that advantage is there. Next slide, please. Now अभी एक latest trend ये है जिसको हम कहते हैं कि hybrid remote. Hybrid बोले तो mix में क्या आपको software, hardware, other kinds of technology, etc. are presented to you in a mixture. And यहाँ पे आपको adjust करके काम करने के लिए, for some items you can work on your own, some other items you have to work with others. ये जो flexibility की जो demand थी अभी वो ज़्यादा हो रहा है. So ये hybrid remote type of office. But presently it is there only in a very few big companies. You cannot have hybrid office in a standard office in say Mumbai or Pune. वहाँ पे तो आपको out and out home पे काम करना है और out and out आपको कंप्यूटर के अंदर ही करना है. मगर ये hybrid जो है, joint system जो है, वो अभी foreign में आने लगा. And people are given the choice. वो एक आदमी बैठेगा, आधा दिन ऑनलाइन काम करेगा, आधा दिन ऑफलाइन काम करेगा, वैसे वैसा. So इससे लोगों को कन्वीनियंस होता है, ऐसा बोला जाता है. But this system is starting to pick up in Western countries only. इंडिया में इतना नहीं है, हालांकि आ रहा है. In metropolitan areas, इंडिया में ये हाइब्रिड ऑफिसेस भी आने लगे हैं और उनको समझने का जो कैपेसिटी है वो भी लोगों को ट्रेनिंग से देना चाहिए. और उधर भी गैप पड़ता है. कोई आपके ऑफिस में कोई हाइब्रिड में इन्वॉल्व हो गया और आप हाइब्रिड में नहीं है तो टेंशन आ गया. तो ये all these rough edges will have to be smoothened out. So but that is happening. Next slide please. हो गया मेरे ख्याल से. So this is in short an overview of the type of work situation that we are facing at home and office.
Presently, we were going deep into at home, but now many companies are going back to in office. वो बोलते हैं कि बहुत हो गया, 2 साल हो गया, हमारा ऑफिस पहले जैसा नहीं लग रहा है, मगर वो एडजस्ट करना ही है. So many people are now rushing back to working from office, but it may not help because many things are done online still. And this transition phase of say 2 years, 3 years, 4 years is going to hurt. But all HR heads will have to work out the methodology where both can be managed better. So ये है आज का न्यू नॉर्मल. आज का न्यू नॉर्मल क्या? पार्टली ऑनलाइन, पार्टली ऑफलाइन, पार्टली हाइब्रिड, पार्टली स्ट्रेट. ये आज का न्यू नॉर्मल है. एंड दिस इज गोइंग टू चेंज. तो मन की तैयारी रखना और उसके लिए एंटिसिपेटरी ट्रेनिंग देना. लोगों को पहले से ही ट्रेनिंग देना चाहिए कि भाई आप हाइब्रिड में हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. There are many things you cannot do online, like factory में production you cannot do online. बस production में जो बनता है, material बनता है, that will be hard, that will be, you can feel it, you can check it. वो तो online करना मुश्किल है. अब order दे सकते हैं मगर delivery etc. online थोड़ी होता है. But completely online करना time लगेगा. It will happen. So in short, you have to be ready for the new norm. न्यू नॉर्म लगभग आ चुका है. डोंट रिसेंट इट, डोंट कंप्लेन, एक्सेप्ट इट, गेट ट्रेन्ड इन एडवांस. योर ट्रेनिंग शुड बी इन एडवांस ऑफ द टेक्नोलॉजी बाय एटलीस्ट 6 months to 1 year, so that when the technology actually arrives at your table, you are ready for it. वो readiness बहुत जरूरी है. नहीं तो आपके काम में, आपके ऑफिस में, आपके घर के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. यही था मेरा मेन मैसेज टू कन्वे टू यू एंड शेयर विद यू. I hope I made some sense. So many thanks. Yes, doctor, I would like to add what you have said, that whatever is changing, you need to adopt, learn. There is no choice. Right. So at the age, my age, which is 66, I have learned a lot of things on computer, mobile technology and all that. Because today to take out money, you are online. Right. To get the taxi, it is online. To book a train ticket, it is online. Right. So you cannot say, I don't know computer or I don't know technology, because you are going to live for another 20, 30 years. So 30 years, you cannot say, I cannot do this and do that, because to learn anything, it requires only 7 days. Right. Right. So my also message to everyone that looking at doctor's new normal presentation, you have to learn and keep changing yourself. There is no other choice. मुझे नहीं आता है बोल के कुछ होने वाला नहीं है. तो आपको करना ही है. आज आपको टैक्सी मंगाना है तो आपको ऑनलाइन जाके ही मंगाना पड़ेगा. सामने टैक्सी खड़ा है फिर भी वो आपके साथ नहीं आएगा. And it is for our safety, because then you know who is the taxi wala, what is his number, everything is recorded. So there is no choice to everybody but to adopt to a new technology, new system, new change. Then only you can progress. Not even progress, only even survival, it is important. बिल्कुल सर. तो मेरा तो submission, girls, ladies above 45 years and male above 55 years to be ready to adopt to change, learn and go ahead. Thank you, doctor, for talking about such a sensitive issue and eye-opening issue. And we hope to learn from you on ongoing basis. Thank you so much. Thank you, sir.